Good evening students, welcome to Commerce Canopy Tradition. Today we are starting theory of production. ठीक अछि? Production रो meaning कोन? हमें already discuss करथिलु आगो chapters रे. Production रो meaning कोन? To change the raw material into final goods or finished goods. माने raw material हमको दिया है जेछि सेडा जेतले finished goods हबो किमा final goods हबो कि final products हबो से मझी जिनसडा माने रॉ मटेरियल टा फिनिश्ड गुड्स कन्वर्ट हबो से जिंस को कोन कहया हमें ना प्रोडक्शन प्रोसेस कहबो कोन कहया प्रोडक्शन प्रोसेस कहबो बट इन इकोनॉमिक्स मेकिंग ऑफ गुड्स और क्रिएशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट इज कॉल्ड प्रोडक्शन एडा होची जनरल सेंस रे प्रोडक्शन माने होची कोन रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स करबार माने कॉटन को कॉटन शर्ट करबार होची प्रोडक्शन बट इकोनॉमिक सेंस रे कोन जानछ ना जेतळ को goods create हेला माने goods made or created कोन पे जानछ ना for selling बिकिबा पे को जिंस होची सेडा आगा हमको प्रोडक्शन अंडर रे आसीबो आ को जिंस भी प्रोडक्शन अंडर रे आसीबोनी का सेंस रेडा इकोनॉमिक सेंस रे हैला as simple as that एबे हम देखिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने ए प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट करिया पई हमहु केति की फैक्टर्स दरकार अछि फैक्टर्स माने कोन व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स रो मीनिंग कोन ना ऑल दोस थिंग्स व्हिच एड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस माने प्रोडक्शन प्रोसेस को जो भी जिंस हेल्प करबो सेटा होचे बर कोन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो एलिमेंट्स को धरि की प्रोडक्शन प्रोसेस ता हबो ताको हमें कहे कोन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन केतरा अछि चारटा कोन हमरो लैंड लेबर कैपिटल आ कोन एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी डिस्कस करथिला हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऊपर डेडिकेटेड माने केति की पोर्शन थिला हमर आगर वीडियोस रे देखो फैक्टर्स कोन अछि लैंड लेबर कैपिटल किंबा एंटरप्रेन्योर लैंड लेबर कैपिटल किंबा एंटरप्रेन्योर ठीक अछि लैंड लेबर कैपिटल किंबा एंटरप्रेन्योर लैंड माने कोन लैंड इज a common usage in soil or surface of earth as factors of production it refers to all natural resources like forest water climate mineral etc it mainly supplies food to people provides space for work and supplies raw material to industry land purpose होची एति की जिंस एबे लैंड फीचर्स कोन हम देखि अच्छा तबे गुड जिंस नोटिस करिवो लैंड रो फीचर्स थिबो लेबर रो फीचर्स थिबो बट कैपिटल फंक्शंस थिबो एंड एंटरप्रेन्योर रो फंक्शंस थिबो कोन पे एडा थोड़ी क्वेश्चन आसे तमरो ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जोड़ा भी अछि फैक्टर्स प्रोडक्शन जोड़ा भी अछि सेडा रे कोन होची लैंड एंड लेबर अलगा एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर अलगा कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एटा सब बड़ा हमरा से कोन फीचर्स एटा सब बड़ा हमरा से कोन फीचर्स ऑफ फंक्शंस हैला फीचर्स कोन पे आसी लैंड एंड लेबर रे फीचर्स कोन पे आसीबो बिकॉज़ एटा होची कोन हमरो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स बट एटा कोन हमरो क्वालिटेटिव फैक्टर्स माने कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जहां भी अछि सेटा होची हमरो कोन क्वालिटेटिव जिंसो गुडा को बट लैंड एंड लेबर जहां भी अछि सेटा होची क्वांटिटेटिव जिंसो गुडा को माने लैंड रो एति की पोर्शन हमें मेजर करबो एकर्स रे लेबर केमती मेजर करिया 10 लेबरर्स वाले मेजर करिया बट कैपिटल कोन अमाउंट एति की अमाउंट थिबो ताकू धरि की को माने जिंसो होची को फंक्शन होची सेटा हमें देखिबा किबा एंटरप्रेन्योर जण अछंदी हैला गोटे मैनेजर अछंदी तार फंक्शन कोन तार पर्पस कोन सेटा हमें देखिबा ठीक अछि लैंड लेबर इज फीचर्स एंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर इज functions land features देखो gift of nature limited in supply immobile factor diminishing returns and land differs in fertility हैला ए पांचटा जिंस होची कोन हमर peculiar features माने होची varying features हैला लिखो एडी varying features land is a gift of nature location of land deposits of mineral at certain places and climatic conditions are no doubt gift of nature तो
आमर जहाँ भी लैंड रो लोकेशन एंड से लैंड रे को मिनरल्स इजीली अवेलेबल होची ताकू धरी कोन आमे जदी प्रोडक्शन एक्टिविटी प्लान करि पारुछु देन कोन होबो जानछ ना हमरा लैंड रो एक्टिविटी लैंड रो पूरा एफिशिएंसी आमे कोन करिया यूज करि परिबा हैला एतिकी एज सिंपल एज दैट लिमिटेड इन सप्लाई माने जहाँ भी कंट्री भीतर जियोग्राफिकल एरिया अच्छी सेडा कोन अलग अलग बिजनेस में अलग अलग की नहीं जेतिकी लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया अवेलेबल अच्छी ताको कोन आमे डिवाइड करिबार अच्छी हमर डिफरेंट अवेलेबल फंक्शंस को धरबी किंबा डिफरेंट अवेलेबल इंडस्ट्रीज को धरिबी सो कोन टोटल जियोग्राफिकल एरिया कोन ना काहा को केतिकी दरकार नै काहा को कोडा यूजफुल रहबो माने मनरो गुटे कोल रीजन टा अच्छी से कोल रीजन टा को इंडस्ट्री को यूजफुल हबो से इंडस्ट्री को सेडा एलोकेट हेले जायगिरी जियोग्राफिकल एरिया रो मैक्सिमम एफिशिएंसी दा यूज हे पारे देन आसे हमरा इमोबाइल फैक्टर land cannot be moved from one place to another cannot be moved from one place to another ठीक अछि can move from one place to another आगोडे अछि लोकेशन डिपॉजिट्स एंड सर्विस कंडीशंस को धरी कोन जदी हमरा लैंड रो एक्टिविटी उडा प्लान हे होची तो लैंड रो टोटल एफिशिएंसी दा हमें उठे पारिबा लिमिटेड इन सप्लाई रे कोन होची ना टोटल जियोग्राफिकल एरिया सेम रहूची रिसोर्स भी सेम रहूची तो ताकू धरि कि जतळ हमें अवेलेबिलिटी रा प्लान करि परिबा सेतळ कोन से सप्लाई रो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें यूज करि परिबा देन आसे हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स early economists held the view that the land is subject to law of diminishing returns increased use of capital labor on any given quantity of land would give diminishing returns माने जिंसो कोन आली कहले गुटे लैंड अछि से लैंड रे कोन कोल एक्सट्रैक्ट होथिले तो फर्स्ट जेतळ से लैंड ता इन्वेंट हला माने से लैंड रे कोल अछि एली कोई इन्वेंट हला से तळको तार एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हेतिबो से ईयर मनर 1000 केजी ऑफ कोल डा हमें माने कोन डिराइव करि पारु नेक्स्ट ईयर सेडा 1000 मिलेबो कि मिल न मिल पारे मे बी 1000 रु टिके कम 900 हे पारे सेडा तमे 5 वर्ष करलो 1000 मिलेबो कि इवन 900 मिलेबो कि 500 भी मिलेबो ना ने जाना नै काहे कि ना अगेन सेम लैंड को हमें यूज करला को कोन होची ना से डिमिनिशिंग रिटर्न्स दोची माने जहां भी से रिटर्न दबार अछि ताडो बहुत कम डिमिनिशिंग रिटर्न से दोची कोन पे ना इकोनॉमिस्ट हेल्प करछथि कोन लैंड से सबले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स रो कांसेप्ट ता इंप्लाई हे जोची सो हियर तमरो क्वेश्चन आस्तिला प्लीज राइट डाउन the factor of production the factor of production to which law to which law of diminishing returns implies the answer is land बुझिला तापर अंडरलाइन करो डिफरेंसेस इन फर्टिलिटी एंड पेक्युलियरिटीज डिफरेंसेस इन फर्टिलिटी और पेक्युलियरिटीज माने कोन जदी गुटे लैंड रे शुगर केन बहुत अधिक प्रोडक्शन होची तो सेम लैंड रे मे बी टोमेटोस की पोटैटो से उडा को एते अधिक प्रोडक्शन हेई पारे बनी काहे कि ना द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन हैला सेम शुगर केन वाले जदी रूट रो जावेज माने और बीट रूट जदी हैला रूट और प्रोडक्शन उडा को होची तो सेडा कोन प्रोडक्शन अधिक हेई पारे बिकॉज़ द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज मैचिंग विद द नेचर ऑफ द वेजिटेबल्स देयर ठीक अछि तो फर्टिलिटी ऑफ लैंड को देखि कि जदि हम प्रोडक्शन एक्टिविटी प्लान करि पारुछु ताको कोन हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी रे यूज करि परिबो बुझिला देन आसे हमर लेबर in ordinary use labor stands for only physical labor in economics labor means physical as well as mental services economics रे कोन physical as well as mental services engaged in production to earn income केते प्रकार माने गुड पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम अर्न करिया पई जहा किछि भी माने कोन मेंटल सर्विसेज एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हेइ अछि दीटा जे जिंस हमर कोन लेबर अंडर रे क्लासिफाई हबो क्लासिक इकोनॉमिस्ट एंड कार्ल मार्क्स हैव कंसीडर्ड लेबर एज अ सोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एडा इंपोर्टेंट मार्क कर माने तांके कहउछन्ती लेबर होछि टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रे सबडो मोस्ट इंपोर्टेंट की इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैला की इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन ना लेबर बुझिला
फीचर्स देखो देयर लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर हैला लेबरर घर रे लेबर को पठे पारियन लेबरर आसी के आगे लेबर करि पारे लेबर इज पेरिशेबल हैला जदी गुड दिन तांको काम देलोनी तो आ कोडी तांके काम देखि पळेबे लेबर इज पेरिशेबल सप्लाई ऑफ लेबर laborers offer more labor at lower wages when wages rise beyond a certain level they prefer to enjoy leisure and supply less labor it is observed that the supply curve or labor is backward bending at higher wages एडा important mark this is somewhat asked examples माने supply curve of labor कोन अछि सबले कोन backward bending at higher wages wages सेते हाई रहइबो हमरो supply माने curve टा सेते backward bending हेगी रहइबो then आसी हमरो weak bargaining power labor has less bargaining power as it's a perishable thing in the same way trade unions are not strengthened so they cannot fight for better wages हैला labor is generally less bargaining power होछ से माने कोन बेसी बार्गेन करि पारंतनी काहेकि माने बहुत जण ऑलरेडी अवेलेबल थाउचंदी तो डिमांड ता कम थाउची सप्लाई ता अधिक थाउची तो ताके कोन बेसी किछि बार्गेन करि पारंतनी differ in efficiency of labor some laborers have more efficiency and some have less efficiency तो efficiency ता obviously different रह बुझिला एडा होची लेबर हमरा फीचर्स एडा गुटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे पारिबो एडा टिके देख कैपिटल देखो in the ordinary sense capital means money for an individual or firm money is a form of capital when it is used to purchase machinery tools raw materials etc ultimately it is these man made goods that is machinery tools etc that help in the production of goods these are vital in rising productivity in different sectors हैला प्लीज अंडरलाइन वाइटल इन रेजिंग प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर्स माने मनी भितरे माने कैपिटल भितरे मनी भी आसुची मशीनरी भी आसची टूल्स भी आसची रॉ मटेरियल भी आसची आ बाकी सब जिंस भी आसुची माने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करिया पे आमे कोन भाबिया कि मनी गुटे जिंस गागा में कैपिटल कयाली बट नाही कैपिटल माने ता कैपिटल अंडर आगा में मशीनरी टूल्स रॉ मटेरियल्स बजाहा किछि भी सब आसुची हैला फंक्शंस ऑफ कैपिटल देखो कैपिटल सप्लाइज टूल्स एंड मशीन्स कैपिटल लागिया हमको टूल्स एंड मशीन्स आसीबो इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी हैला लेबर रो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हबो सप्लाइज रॉ मटेरियल हैला कैपिटल लागिया हमर रॉ मटेरियल रो सप्लाई हे परिबो जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट हैला एम्प्लॉयमेंट ता अधिक मिलेबो देन प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैला मनी थिलागा कोन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अरेंज करि परिबा बुझला ना माने से कोची गुटे अमाउंट ऑफ कैपिटल जदी इन्वेस्ट करची गुटे ओनर मनी को हम कैपिटल कहबा इक्विटी से कैपिटल रो कोन हे परिया फर्स्ट थिंग होची टूल्स और मशीन्स किनि परिबा लेबर मानु को अधिक वेज दे तांको प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करि परिबा रॉ मटेरियल सप्लाई अधिक करि परिया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करि परिया हम पारे पैसा थिले बेसी भलो लेबर को एम्प्लॉय करि परिबा देन आसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करि परिबा क्लियर एवडा को क्वेश्चन आसे नहीं बट मो डिस्कस करची एज दिस इज इन कोर्स पेमेंट ऑफ फैक्टर्स other factors of production land को रेंट देबार अछि लेबर को वेज देबार अछि कैपिटल जदि आनछ कोड रो इंटरेस्ट देबार अछि एंटरप्रेन्योर को कोड तार निजर प्रॉफिट रखियार अछि अल्टीमेटली कैपिटल आगे सब जिंस को स्प्रेड होबो ना कैपिटल माने कोन मनी मनी आगे सब जिंस कोन होबो ए पोर्शन होबो ना नहीं एंटरप्रेन्योर देखो द पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस द प्रोडक्शन माने हु प्लान्स द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ताको कौन कहया में एंटरप्रेन्योर और ओनर हैला एंटरप्रेन्योर और ओनर he is considered as a separate factor because he performs specific functions different from those of other factors nowadays an entrepreneur is not considered as separate factor but as special type of human laborer whenever the ownership and management are one and the same entrepreneur has to perform certain specific functions हैला जदि सेम स्पेसिफिक फंक्शंस प्रोवाइड करिवार अछि हैला सेम स्पेसिफिक फंक्शंस प्रोवाइड करिवार अछि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को तो ओनर मागो गुडे निजर आइडेंटिटी रहइबो कोन माने अलगा ऑर्गेनाइजेशन को अलगा प्रकार सर्विसेज देबार मनोर से कोन फाइनेंशियल एनालिसिस सर्विस प्रोवाइड करूछ मनोर गुडे कंपनी अछि से कंपनी कोन ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ गुडे कंपनी कोन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि प्रॉफिट पे काम करनी हेले प्रॉफिट पे जे काम करछि ता पे सर्विसेज अलगा रहइबो नॉन प्रॉफिट पे तार सर्विसेज अलगा रहिबो ना नहीं दीडा जिंस जे तो डिफरेंट रहिबो तो कोन हबो हमर ना गुटे ओनर आगा ता जे दीडा जिंस को डिफरेंशिएट करिकि प्रोवाइड करि पारे ह ना नहीं सेटा से कोच फंक्शंस देखो इनिशिएशन ऑफ बिजनेस इनिशिएशन माने स्टार्ट
decision making hela decisions nabo, choosing the technology hela को technologies use करिया को proportion रे use करिया ताकि हमर कोन आउटपुट टा मैक्सिमाइज हबो कॉस्ट टा मिनिमम हबो माने को टेक्नोलॉजी यूज करिया को proportion रे यूज करिया माने को रेशियो रे हला को माने देखो मनर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स अछि गोटे टेक्नोलॉजी अछि सेडा यूज करले से प्रोडक्ट्स रे कोन अल्टीमेटली समस्त को रीचेबिलिटी भल रहबो कस्टमर सैटिस्फैक्शन अधिक हबो कि कोन तार पैकेजिंग उडा भल आसीबो बट कोन हमें नॉर्मल प्रोडक्ट्स रे भी जदी सेडा यूज कर दम कॉस्ट अधिक पड़ जिवो नाही तो ओनर कोन करे क्लासिफाई करियो कि ए प्रोडक्ट्स रे मते रेवेन्यू जदी अधिक आसुची ताको लागिला एमिति देन ओनली ही विल डू व्हाट ही विल जस्ट एपोर्शन इट इन द राइट प्रोपोर्शन एंड ताकि कोन आउटपुट टा पूरा मैक्सिमाइज हे जिवो कॉस्ट ताको मिनिमम पड़ बुझिला. Then innovation. He must be dynamic to introduce new methods, techniques and products. Dynamic माने कौन? Changing and adapting. Changing and adapting to new trends. Different trends को धरिकी कौन हम सब adopt करकी रखिबार हैला. Pay the reward of factors. An entrepreneur has to pay the reward to other factors. से कौन करियो other factors of production को reward payment करियो. He has to bear the responsibility either for the profit or loss in the production process. हैला profit हो loss हो से बाध्य सब जिंस माने कौन bear करिया पय तो कौन करियो से risk factor भी owner आगा handle करिवो एतिके रहला कौन हमरो owner रो factors of माने owner जहा भी functions हैला गुटे owner कौन carry out करियो गुटे हो से business start करियो सिया आगा decisions नबो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करिवो कोड टेक्नोलॉजी इमिति इंट्रोड्यूस करियो कि तारो कोन आउटपुट मैक्सिमाइज होबो कॉस्ट मिनिमाइज होबो देन कोन नुवा ट्रेंड्स को से एडॉप्ट होबो देन कोन करियो फैक्टर्स को रिवॉर्ड माने जेमति से पाइबो सेटा से देखिबो माने मनर प्रॉफिट हैला ऑटोमेटिकली से भल से एपोर्शन करिवो जदी लॉस हैला सेटा फर्दर इंक्रीज न होई कि कोन हमरो माने मेजर्स लेबर अछि सेटा भी से चिंता करबो हैला दीस आर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर और ओनर. Hello, clear? Now we देखिए law of production रो introductory part. तमरो जो दीडा law अछि these are the most important things in the entire chapter. हैला जोडा कि तुमको क्वेश्चन आसीबो दीडा law अछि से भितरे बहुत किछि क्वेश्चंस आसीबो तमरो नेक्स्ट क्लास रे ए दीडा law सेपरेटली माने लाइक एक्सप्लेनेशन हबो एक्सप्लेनेशन हैला परे नेक्स्ट जहा भी ता अंडर रे कोन हबो गोटे चार्ट बनाबो जोडा रे कि तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन केमति आसीबो से फॉर्मेट टा लिखा हबो माने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल गोटे दीडा इमिति लॉस जोडा कि प्रोडक्शन प्रोसेस टा लॉन्ग टर्म हेले कोन हबो शॉर्ट टर्म हेले कोन हबो सेडा धरि कि गोटे प्रोड्यूसर जे भी अछि से कोन मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम कॉस्ट किमिति अचीव करबो सेडा देखेबो हैला गोटे होछि लॉन्ग टर्म गोटे होछि शॉर्ट टर्म सेडा भल से बुझिबा पे हमको तार टर्म्स बुझिबा को पड़ियो जोडा कि हम एबे देखि. सो फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोडक्शन माने कोन खाली देखो in economics deals with the concepts of cost and producer equilibrium. Important mark करो law of production कौन माने बुझेबो फर्स्ट होची cost concept of cost और सॉरी cost और concept and producers equilibrium सेटा कोन हमें देखिबा equilibrium रो मीनिंग हम बुझिथिलो demand is equal to supply रो पॉइंट ता सेटा होची equilibrium producer equilibrium कोन हमें सेटा परे देखिबा. It is an important aspect of economics as it helps business to determine the level of output that leads to maximum profit. It also defines the various variable and fixed cost of the firm. Hello, loss of production jaha bhi achi loss of production jaha bhi achi seta kon jancho na bujhebo explains what cost concept and producer equilibrium cost concept and producer equilibrium तापरे purpose helps us achieve maximum output and profit.
आउटपुट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमम जहां भी अछि अचीव करिया पे से हेल्प करबो हला आ कोन बुझेबो ना determines different variables and fixed costs of the firm. Fixed costs of the firm. बुझला different variables of firm रो fixed cost गुडा को कौन करियो बुझे clear एति की जिंस कोन लॉस ऑफ प्रोडक्शन रो हमको जोड़ा पड़े एडा होचे हमर इंट्रोडक्टरी पार्ट हला एबे हमें देखिया कोन ना प्रोडक्ट कांसेप्ट्स इन दिस को कांसेप्ट गुडा का यूज होची सेडा हमें देखियो फर्स्ट होची टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट total product average product and marginal product it refers to the total output of the firm per period of time गोटे पर्टिकुलर पीरियड आमे नोट्स मनर 6 मंथ्स तो 6 मंथ्स रे टोटल आमे केतरा प्रोडक्शन करछ केतरा यूनिट्स प्रोडक्शन करछ सेला कोडा रे आसबो ना टोटल प्रोडक्ट अंडर रे आसबो as simple as that average product कोन ना टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट माने कोन ना टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर क्वांटिटी मनर 50 प्रोडक्ट्स आमे प्रोड्यूस कर 50 प्रोडक्ट्स 50 यूनिट्स 50 यूनिट्स ऑफ मनर चेयर्स हमें प्रोड्यूस करछु हैला 10 टा लेबर हमें एम्प्लॉय करलो तो ऑन एन एवरेज गुटे गुटे माने लेबरर जे भी अछि से केतरा प्रोडक्शन करछि 5 ऑब्वियसली माने टोटल प्रोडक्ट हमरो हैला केते 50 यूनिट्स लेबरर जे भी अछंदी मनर 10 लेबरर्स अछंदी तो एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू 50/10 तो केते हमरो 5 हैला बुझी पाला तो एडा होची कोन हमरा एवरेज प्रोडक्ट एबे बुझो मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर हैला वेरिएबल फैक्टर कोन एडी बुझो एडा हमें प्रोडक्शन करछु कोन प्रोडक्शन हमें करछु फर्नीचर्स प्रोडक्शन करछु फर्नीचर प्रोडक्शन पाई हमरो फिक्स्ड फैक्टर कोन मनर गोटे मशीनरी अछि machinery and land गोटे पर्टिकुलर रूम अछि से रूम रो गोटे मशीनरी डा हमें रखिछु से मशीनरी रे कोन हमें जहां भी प्लास्टिक की जहां भी मटेरियल हमें यूज करछु से मटेरियल हमें पक्के गिरी फर्नीचर रो डिराइव करछु आ वेरिएबल फैक्टर कोन वेरिएबल फैक्टर कोन लेबर क्लियर लेबर हमरो होची वेरिएबल फैक्टर तो हमें केतरा प्रोडक्शन करलो 50 यूनिट्स लेबरर्स हैला हमरो 10 टा हैला लेबरर्स हैला हमरो 10 टा तो मार्जिनल प्रोडक्ट कोन कहउची जान छ ना हमरो 10 टा हैला को 50 यूनिट्स हेच 11th लेबर हमें इंक्रीज करलो एटा होची वेरिएबल फैक्टर हमरो गुटे लेबर हमें इंक्रीज करलो गुटे लेबर इंक्रीज करला को एडा हैला हमरो 53 यूनिट्स हेच नुआर इंट्रोड्यूस करछो 53 यूनिट्स होइछ तो मार्जिनल प्रोडक्ट केते जानछो 3 units. This is the marginal product. बुझी पालो introduction of one additional unit of variable factor गुट्टे additional unit of variable factor increase करले हमर कोन total product ता केते मात्रा रे increase होची by what proportion is the total product increasing हैला एडा होची हमर marginal product माने हमें जानि परिबा एडा कोन पे यूज होबो जानचो जदी हम मनर गुटे एडिशनल ऑर्डर टी आसी हैला इमरजेंसी ऑर्डर आसीला से कहला हम गुटे 7 टा फर्नीचर खंडे दरकार 7 फर्नीचर्स दरकार त हमें कोन मार्जिनल प्रोडक्ट ता जानचो जदी गुटे एवरेज गुटे सडनली गुटे लेबर को हम इंट्रोड्यूस करलु गुटे लेबर को इंक्रीज करला हमर प्रोडक्शन प्रोसेस रे 3 यूनिट्स रे इंक्रीज हे जोच हैला त हमें कोन गुटे 3 जण जदी डाकी के आनी दबो त हमें केतरा प्रोडक्शन करि पारु ऑन एवरेज 9 करि पारु तो आराम से कोन जदी भी के गुटे डिफेक्ट भी बाहर पड़ला 8 तो रहिबो ना तो 7 रा हमें दे पारिया ना बुझला ना नहीं ए जिंस पे कोन मार्जिनल प्रोडक्ट रो एनालिसिस हबो हैला एडा होची इंपोर्टेंट सब टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट बुझला मार्जिनल प्रोडक्ट आगा टिके इंपोर्टेंट क्लियर माने गुटे एडिशनल यूनिट ता इंक्रीज हैला अलगु एडी केतरा यूनिट्स हमरो इंक्रीज होची माने 53 - 50 11 - 10
गुटे इंक्रीज हल्ला को कोन हला हमरो गुटे लेबर इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा करला को हमरो टोटल यूनिट्स टा बाय 3 इंक्रीज हे गला माने गुटे इंट्रोड्यूस करले 3 यूनिट्स एडिशनल यूनिट को 3 यूनिट्स तो एडिशनल यूनिट केते हमको डिराइव करके देला 3 यूनिट्स तो केमती भी बुझी पा तापर देखो it is the total amount of output obtained by the firm or producer by the employment of total unit of factors of production when the marginal productivities of labor added then total productivity can be obtained से गुटे कथा का कोच है ना average product देखो product per unit of labor when the total product is divided with number of units of labor एटा होची total product by laborers एडी देखो से कौन कोई एडिशनल प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द फर्म और प्रोड्यूसर बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर और वन मोर यूनिट ऑफ लेबर ते लेबर इंक्रीज करी की कोन से पाए सेटा होची कोन हमर मार्जिनल प्रोडक्ट क्लियर ए जा होची हमर लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शनल रिटर्न्स टू स्केल जोडा कि काली हबो एबे देखो प्रोडक्शन फंक्शन रो मीनिंग होची इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स ऑफ a firm for a given state of technology. The production function is purely technical relation that connects factor inputs and factor outputs. माने relationship between physical inputs and physical outputs at given state of technology at given state of technology बुझी पालो relationship between physical inputs and physical outputs माने कोन physical inputs माने कोन raw material physical outputs माने कोन कोन हेथियो बुझिला माने जो वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्ट उडा नाइ की से दिरा जिंसरा कोन हमर रिलेशनशिप हे पारियो किम्बा कोन लेबर रो रिलेशनशिप हे पारिबो माने अल्टीमेटली कोन इनपुट्स एंड आउटपुट फैक्टर्स रो जहां भी अछि जोडा की प्रोडक्शन पे रिस्पांसिबल सेडा रे कोन रिलेशनशिप ता से देखेबो हैना देन देखो देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर इनपुट्स एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स हैला हमर कोन एडी जहां भी रिलेशनशिप अछि सेडा कोन प्योरली टेक्निकल रिलेशनशिप तमर एडी दीडा क्वेश्चन हे पारिबो हैला गुटे होची प्रोडक्शन फंक्शन is purely technical हैला आउ relation between factor inputs माने raw material factor inputs and amount of goods factor inputs and amount of goods is functional हैला कोन functional clear एबे देखो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हमरो प्रोडक्शन फंक्शन रो मीनिंग हमें जानलु कि जहां भी फैक्टर इनपुट्स अछि फैक्टर आउटपुट्स अछि फिजिकल फैक्टर इनपुट्स एंड फिजिकल फैक्टर आउटपुट्स रो रिलेशनशिप ता देखेबो सेटा होछि कोन सब बळे टेक्निकल रिलेशनशिप माने गुड इक्वेशन रे हमें ड्रा करी कि देखे पारिबो बट जहां भी हमर फैक्टर इनपुट्स आउट माने फिनिश्ड गुड्स जहां भी अछि माने रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स रो रिलेशन ता सब बळे कोन हमर फंक्शनल बट फैक्टर इनपुट्स एंड फैक्टर आउटपुट्स रो रिलेशन सब बळे टेक्निकल एतिया को बुझिबो एथे Production function is of two types, short period production function and long period production function. Short period production function and long period production function. Short period production function rate shows the relationship between production and factors of production in the short period. In the short period, all factors may not be available. So the factors of production in the short period can be divided into fixed factors and variable factors.
The factors which are not available in short period, they can be kept as constant, so they are called fixed factors. माने land, building, machinery. The factors which are available to change the output in the short period are called what? Variable factors. माने capital, labor, raw material. माने से कौन कोच जानते ना short period माने होची मनर 6 months time period आमे नबा. Short period माने कौन? Example मन होची 6 months. ହେଲା हेले एडी कोन all factors may not be available. 6 months time period रे हम जानि दे पारिया कोन ना एतिके टाइम पीरियड पे ए लैंड ता हमको मिलेबनी एतिके लेबरर्स हमको मिलेबनी कि जहां भी कोन रॉ मटेरियल ता हमको भल से अवेलेबल हबनी हैला मु अगेन से कांस्टेंट एग्जांपल होची कॉटन शर्ट रो कॉटन रो गुट्टे पीरियड ऑफ टाइम रे कोन जदी मन तो ताको बहुत भल रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी अछि बट पर पीरियड रे ताको मिलुनी तो फर्स्ट 6 मंथ्स जहां भी अछि से कोन ता एनालिसिस रे जाना पड़ला कि कॉटन ना मते एते इजीली मिलेबनी तो से पीरियड रे कोन सेडा हम कांस्टेंट रखि पारिया माने फिक्स्ड फैक्टर हिसाब रे रखि पारिया सॉरी वेरिएबल फैक्टर हिसाब रे रखि पारिया काहेंगी हमर अवेलेबिलिटी ता चेंज हबो बट मु कोची कोन जोडी प्रोडक्शन एक्टिविटी हबो सेडे लैंड ता कोन हमहु इजीली अवेलेबल हबोनी माने से लैंड रे जदी हम प्रोडक्शन एक्टिविटी करि थांदो तो इजीली टिके हेई थांदा मार्केट को रीच करिवार बट से लैंड ता सेडे हमहु मिलुनी तो सेडा हम फिक्स्ड फैक्टर अंडर रे नै पारिबा बट लॉन्ग पीरियड रे कोन होछ जानछ ना लॉन्ग पीरियड रे the classification of fixed factors and variable factors is related only to short period but long period रे सब जाको variable factor माने long period माने 3 वर्ष 3 वर्ष भितरे तमे कोन गुटे एमिति टाइम पीरियड काडी पारियोनी कि जेतलो से लैंड तम अवेलेबल हबो केबे ना केबे तो फ्री रहिबो आगर ना तो सब जा फिक्स्ड फैक्टर उडा को वेरिएबल हे पारे लॉन्ग पीरियड रे कोना रे माने समय सब कुछ ठीक कर लेगा एमिति आगा बुझिला ना तो लॉन्ग पीरियड जेतलो दबो एमिति ना कि किछि अवेलेबल हबन तो हमको लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन टा गोटे मोटिवेशनल फैक्टर बुझिला ना तो आमे जदी माने डिफिकल्टी पीरियड रे जदी जगी बा डिफिकल्टी पीरियड को टाइम दबा तो रैंक भी बहुत इजीली आमे पाई जिबा बट आमे स्पैन रखि देबा कि हमको वर्ष भीतर करेर अछि 2 वर्ष भीतर करेर अछि तो मे भी सेडा न हेई पारे केतरा फिक्स्ड फैक्टर हमको रहि छै हैला पढ़ाई से हट के मु कहि देली बट कहूची अल्टीमेटली शॉर्ट पीरियड फंक्शन रे हमको दी टाइप अछि फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर काहेंगी 6 मंथ्स रे हम जानि पारे कि ए जिंस हमको मिले ए जिंस हम मिलेबो बट 3 इयर्स टाइम पीरियड रे सब जिंस मिलेबो आज नले काल मिलेबो तो सेति पे कोन लॉन्ग पीरियड फंक्शन रे ऑल थिंग्स आर वेरिएबल बट शॉर्ट पीरियड रे कोन हमको फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर दीडा जगह अछि It explains the relationship between production and factors of production in the long period. It is called as law of returns to scale. जोड़ा कि काली पढ़िया में law of returns to scale. Here the production system is guided by the law of returns to scale. एडी कौन होची ना law of variable proportion. Law of variable proportion. एडी law of returns to scale. बुझी पालो? Clear? एडा होची जिंस माने टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्लियर देखो एबे खाली मु डिस्टिंक्शन माने डिस्टिंग्विश भितरे जहां भी अछि सेडा रे तुम कोड इंट्रोडक्टरी फैक्टर ता मु देखेबी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कोन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कोन हैला काहेंगी पूरा लॉडा में परे पडिबा ए भितरे कोन अछि माने एक्चुअली से जिंस कोन हम जानबा हैला फर्स्ट थिंग होची रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर आ एडा होची रिटर्न्स टू स्केल रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर रो अदर नेम होची लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हैला आ एडा कोन हम रिटर्न्स टू स्केल माने लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल law of returns to scale एटा कोन law of clear law of variable proportion जहां भी अछि सेटा सब बळे शॉर्ट टर्म पीरियड रे काम करियो सेति पे एटा कोन कहया बे शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन माने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रे हम एग्जांपल केते नेथलो 6 मंथ्स हैला शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रे सब बळे कोन law of variable proportion ना काम करियो बट एडी कोन ऑपरेट्स इन द लॉन्ग रन आ एडा को लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहै लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहबा ओनली द क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स वैरी एडी कोन वैरी होबो ना क्वांटिटीज वैरी होबो मनरो गुटे लेबर अछि से 10 घंटा काम करथला से 5 घंटा काम करियो कि 15 घंटा काम करियो तो क्वांटिटी रे चेंज होछ किबा कोन 10 टा लेबर आनथिलु 5 टा लेबर आसीबे गुटे दिन पे 7 टा लेबर आसी नेक्स्ट दिन पे तो क्वांटिटी चेंज होबो लेबरस रो नेचर चेंज होबो
all factor inputs are varied in same factor proportion. एडी कौन हो जानते ना? The ratio of change, the ratio of change is almost same. माने सेम रेशियो रे चेंज होथो माने टू लेबरर्स इंक्रीज हेले प्रोडक्ट टू इंक्रीज हबो सिमिति हेगी हमर कोन चेंज होथि ना फैक्टर इनपुट्स तो रॉ मटेरियल दीडा इंक्रीज हेले हमर फिनिश्ड गुड्स भी गुटे के किंदी इंक्रीज होछ इमिति चेंज हबो देयर इज अ चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन देयर इज नो चेंज इन फैक्टर रेशियो एटा बहुत भल से पूछो इंपोर्टेंट पॉइंट है there is a change in factor proportion, there is no change in factor ratio. माने example से कुछ देखो suppose on 1 acre land one labor is employed then the land labor ratio is 1:1 माने गुटे acre land रे गुटे labor employ हैला तो ratio कौन रहेला 1:1. Now if we add one more unit of labor on 1 acre land then the land labor ratio would become 1:2. तो कौन कोजी factor proportion टा change हे परिबो माने factors of production हमें जान लो तो को रेशियो रे हम यूज करछ सेडा हम देखुछु तो फैक्टर प्रोपोर्शन टा एते इजीली चेंज होबनी जदी हेले फैक्टर प्रोपोर्शन रेशियो रे चेंज होबो बट एडी कोन होछ देखो if a firm is employing 1 unit of labor and 2 units of capital then the labor ratio is 1:2. Now if the firm increases its scale of operation and employ 2 units of labor and 4 units of capital the labor capital ratio still remains to be 1:2. माने से कोछ कोन इनिशियली कोन जहा भी रखा है इनिशियली देरा फैक्टर्स रखा है ता रेशियो जदी सिमिलर अछि एली कहले सेटा जदी इंक्रीज हेले भी ता रेशियो जहा भी अछि सेटा ऑलमोस्ट सेम आगा रहिबो तो इंक्रीज ता सेमिति डिपेंड करिकि रहिबो क्लियर लास्ट पॉइंट देखो no change in the scale of production because here all factor inputs are not changed हला scale of production ना change हबनी it is change in scale of production रीजन दरकार नहीं बट तमरो ए डिस्टिंक्शन पार्ट ता वेरी इंपोर्टेंट मार्क काहेकि पूरा लॉ जतलो को बुझिबो सेडारो इंटरनल क्वेश्चंस आंसर करिवो बट एडा तुमको किछि डायरेक्ट क्वेश्चंस अछि हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट टू चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन कोडा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट टू चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन वेरी गुड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल काहेकि एडी लिखा है देखो रीजन कोन ना ऑल फैक्टर इनपुट्स आर वेरिड इन सेम प्रोपोर्शन ऑल फैक्टर इनपुट्स आर वेरिड इन सेम प्रोपोर्शन तुमको एडा देगिरी भी ता रीजन पचरी पारिबो हला फैक्टर इनपुट्स आर वेरिड इन सेम प्रोपोर्शन और फैक्टर्स आर वेरिड इन सेम प्रोपोर्शन ना फैक्टर आउटपुट्स आर वेरिड इन सेम प्रोपोर्शन ना नन ऑफ द अबव तो आंसर इज फैक्टर इनपुट्स आर वेरिड इन सेम प्रोपोर्शन हला एते की जिंस रे तुम बहुत क्वेश्चन आसी पारे हला एडा होची बहुत इंपोर्टेंट जिंस फाइन तमे नेक्स्ट क्लास रे देखिया कोन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन थैंक यू